ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वी आर डूइंग दिस अक्टूबर नवंबर 2024 वेरिएंट 32 एंड वी आर इनटू दिस केस हबीशा क्लीन कुकिंग। पेपर 3 इन टोटल जो है वो हमारा 1 hour 45 minutes का होता है और आज हमें इसका क्वेश्चन 3 देखना है। क्वेश्चन 1 और 2 हमने इसका अटेम्प्ट कर लिया, दोनों जो है वो 8 मार्कर्स होंगे। एंड नाउ इफ वी सी दिस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस पेपर, सो पेपर 3 में हमारे पास जो है कैलकुलेशंस आएंगी कुछ। 4 मार्क्स की टोटल कैलकुलेशन होगी और फिर हमारे पास 12 मार्कर होगा, 12 मार्कर। ठीक है। एंड फॉर 12 मार्कर हमें कितना रिटन स्पेस गिवन होगा देख लिया, आधा पेज और फिर ये एक पेज, यानी कि 1.5 पेज, 1.5 पेज हमें गिवन है फॉर अ 12 मार्कर। गिवन स्पेस थोड़ी सी कम पड़ती है जनरली, इफ़ यू राइटिंग अ गुड आंसर देन जनरली जगह कम पड़ती है। लेकिन लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, क्वेश्चन पे पहुंच चुके हो तुम लोग सारे? इसका प्रिंट आउट होना चाहिए तुम्हारे पास आइडियली। क्या तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन आ चुका है? So let's see what the question is. Refer to table 1.1, calculate annual labor productivity for 2023. We have to calculate the labor productivity for 2023. So let's go to the insert. Let's see table 1.1. And क्या data हमें given था? HCC performance review of employees manufacturing cook bags, and then we have been given आउटपुट ऑफ कुक बैग्स जो है लास्ट ईयर 49,700 थे, दिस ईयर द आउटपुट हैज इंक्रीज टू 60,000 एंड द टारगेट वाज 50,000 58,000, जिसका मतलब हम टारगेट से ऊपर मैन्युफैक्चर कर चुके हैं। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 7 and 8, and then employees contracted to work 235 days per year, each employee work 235 days per year, और 8 एम्प्लॉयज हैं ऑन एन एवरेज और 7 एम्प्लॉयज थे ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर। लेबर प्रोडक्टिविटी हमें 7100 गिवन है 2022 की। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है, आउटपुट पर एम्प्लॉय निकालना है बेसिकली। सो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। टोटल आउटपुट कितना है हमारा? टोटल आउटपुट दिया हुआ है कितना? 60,000। 60,000 इज द टोटल आउटपुट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हमारे पास? 8। ठीक है, 60,000 यूनिट्स बनाए हैं, ऑन एन एवरेज वी हैव 8 एम्प्लॉयज। सो व्हाट इज लेबर प्रोडक्टिविटी, टेल मी। कैलकुलेटर्स चलाओ साथ साथ। 7,500 कुक बैग्स पर एम्प्लॉय। ठीक है जी, लेबर प्रोडक्टिविटी हमारी 7,500 है। लास्ट ईयर कितनी थी हमारी? लास्ट ईयर थी 7,100। ओ, द प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज, लेबर इज गेटिंग मोर प्रोडक्टिव, वी आर मोर efficient in the utilization of our employees. And then we have been given days lost due to absenteeism last year, 30 दिन जो है वो छुट्टियों की वजह से ज़ाया हुए, और इस साल जो है वो 32 दिन छुट्टियों की वजह से ज़ाया हुए हैं। तो क्या है अगली रिक्वायरमेंट देखो। रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट द रेट ऑफ एब्सेंटीइज्म फॉर 2023। कैलकुलेट द रेट ऑफ एब्सेंटीइज्म। एब्सेंटीइज्म अगर हमें निकालना है परसेंटेज में छुट्टियां, सो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज लॉस्ट ड्यू टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो टोटल नंबर ऑफ डेज लॉस्ट कितना है हमारा? हाउ मेनी डेज वर लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंटीजम? कौन से साल का निकालना है हमें? निकालना है 2023 का। सो 2023 का डेटा हमारे लिए वैलिड है। इसका मतलब है कि कितने दिन हमारे छुट्टियों की वजह से ज़ाया हो गए? 32 दिन, 32 days। 32 days वर लॉस्ट ड्यू टू एब्सेंटीजम। एंड टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने हैं? सारे जो हमारे पास 8 एम्प्लॉयज हैं ऑन एवरेज, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर कितना है? टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर कितना है बताओ? बट 32 डेज का तो लॉस हुआ है हमारा क्योंकि लोगों ने छुट्टियां की थी। टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर,
ये लिखा है ना, एम्प्लॉयज आर कॉन्ट्रैक्टेड टू वर्क 235 days पर ईयर। ठीक है। और 235 days पर ईयर एक बंदा देता है, और मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं? 8। एक एम्प्लॉय साल के 235 दिन देता है, एक एम्प्लॉय। तो 8 एम्प्लॉय कितने दिन देते होंगे बताओ? If one person gives 235 days, then how many days will the 8 people give me? 8 एम्प्लॉयज हैं, इंटू 235 days पर ईयर, तो टोटल कितना हो गया? 1880 days. So basically in a year we have 1880 working days. अगर एक बंदा 235 दिन काम करता है, तो इसका मतलब है कि 8 बंदे जो है वो 1880 दिन जो है वो पूरे साल का है था, जिसमें से 32 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो उसका मतलब हो गया कि परसेंटेज में अगर देखें तो एब्सेंटीजम रेट जो है हमारा 1.7% है। ठीक है, 1.7%। द एब्सेंटीजम रेट फॉर 2023 इज 1.7%। नहीं, हमें टोटल डेज में से कितने दिन छुट्टी हुई, टोटल डेज का प्रोपोर्शन निकालना होता है। हमने माइनस कर दिया तो फिर तो उसमें से रेशियो नहीं निकल सकता। मतलब टोटल डेज में से जितने दिन की छुट्टी हुई वो कितना परसेंट था बेसिकली। राइट। और इसके बाद जो है हमारे पास absenteeism आ गया 1.7%, whereas the industries it's given like in 2023 the average manufacturing absenteeism rate in country E was 5%। on an average industry का absenteeism 5% है, लेकिन हमारा जो है वो हमने absenteeism 1.7% पे मेंटेन किया है, which is pretty cool. So let's see what the next question asks us. So what the next question is, evaluate HCC's approach to human resource management. Human resource management के लिए ये जो अप्रोच यूज कर रहे हैं, कैसी अप्रोच लगती है आपको? ये सवाल है भाई। इंट्रो देना होगा इसमें, एंड दो मेन पैराग्राफ्स, 12 मार्कर में हमें वी हैव टू क्रिएट 2 main paragraphs एंड देन वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन पैराग्राफ। ठीक है। साथ साथ जो है वो चाय बिस्किट भी चल रहा है, तो बेसिकली ये जो सवाल है ना, अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, there are there are broadly 2 main approaches। अभी अगर तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत इजी सी डिस्कशन है, एक छोटी सी, ये समझ भी आ जाएगा। 2 main अप्रोचेस होती हैं, याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। एक को कहते हैं हम हार्ड HRM अप्रोच, और एक को हम कहते हैं सॉफ्ट HRM अप्रोच। देर आर 2 main अप्रोचेस। हार्ड HRM अप्रोच का मतलब होता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट अप्रोच, थोड़ा कॉस्ट कंट्रोल वाला माइंडसेट होना, कि अगर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करूंगा तो मुझे बस उनको अच्छी मुनासिब सैलरी देनी है, लेकिन जब तक मुझे ज़रूरत है मैं रखूंगा, जब ज़रूरत नहीं है मैं निकाल दूंगा। I'll try to give my employees the temporary contracts. I would not just invest on trainings. I would not just them involve a lot in decision making. I would have one-way communication. Very clear and precise instructions would be given, and the employees would just have to follow it. The employees would have to follow it, or they can just go. That is how what I deal with. इस mindset को कहते हैं hard HRM approach, being very firm and clear with your instructions, and the employees are expected to follow those instructions, sort of an autocratic style, flexibility के साथ। खर्चे बचाने की बात करो,
स्टाफ को आप ये समझो कि बस वो एक एक्सपेंस होता है और आप उसको कम से कम खर्चे में चलाओ। ये माइंडसेट को कहते हैं हार्ड एचआरएम। और सॉफ्ट एचआरएम माइंडसेट उसको कहते हैं, सॉफ्ट एचआरएम इज जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को एज एन एसेट कंसिडर करते हैं, हम समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट की तरफ भी लेके जाते हैं। उनको हम डिस्कशंस में भी इन्वॉल्व करते हैं, मीटिंग्स में भी इन्वॉल्व करते हैं, उनको हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। क्योंकि एम्प्लॉय खुश तो अल्टीमेटली बिजनेस अच्छा चलता है। इस माइंडसेट को कहते हैं सॉफ्ट एचआरएम। हार्ड एचआरएम इज लाइक मोर स्ट्रिक्टर अप्रोच, मोर कॉस्ट कटिंग अप्रोच, whereas सॉफ्ट एचआरएम इज मोर लीनियंट एंड मोर एम्प्लॉय डेवलपमेंट बेस्ड अप्रोच। तो ये इन दो अप्रोचेस होती हैं हमारे पास। ये जो अबीबा है वो कौन सी अप्रोच फॉलो करती है तुम्हारे हिसाब से? जहाँ तक एम्प्लॉय की बात है तो व्हाट अप्रोच अबीबा इज एक्चुअली यूजिंग? Clearly, she is using soft HRM approach, and she really values her employees, I guess. And now हमें ये evaluate करना है कि ये जो soft HRM approach use कर रही है, मतलब how effective that approach sounds, how effective that approach is in the situation। ठीक है। अब इसमें हमें पैरा वन, पैरा टू, और फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें देना होता है अपना ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब देना होगा कि हमारे हिसाब से अप्रोच अच्छी रही है या अप्रोच अच्छी नहीं रही है। सही है, सॉफ्ट एचआरएम ही सही था या हार्ड होना चाहिए था? तो पैराग्राफिंग कैसे करें इसकी? आई गेस एक में हम बता देते हैं फेवर में मोटिवेशन जो है वो क्लियरली बहुत ज़्यादा है, पीपल आर रियली रियली सेटिस्फाइड। क्लियरली है ना, एक फेवर में पैराग्राफ बना देंगे, एक अगेंस्ट में बना देंगे कि क्यों अप्रोच अच्छी है, क्यों अप्रोच के मसाइल क्या हैं। आई थिंक फेवर में हम लिख सकते हैं कि मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ की क्लियरली ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एब्सेंटीज़म भी काफ़ी कम मेंटेन किया हुआ है, तो क्लियरली स्टाफ सीम्स टू बी वेरी मोटिवेटेड। हाउएवर अगेंस्ट में जा सकते हैं कि हाउएवर इस तरह की अप्रोच बहुत कॉस्टली होती है, उसमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हो तो उसके पैसे लगते हैं, जाहिर सी बात है कॉस्ट्स बढ़ती हैं। और कंक्लूजन में हमें फिर अपना ओपिनियन देना होता है कि हमारे हिसाब से ये अप्रोच जो इसने यूज़ की है वो सही है या नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल this approach? What do you feel about this approach? Has the business been successful, and was this the right way Abiba was doing? Was Abiba right or wrong in her approach to HRM? It's a good approach, but business needs to be mindful of its increasing costs. Nice one, Abdullah Aways. जबरदस्त। मेरे हिसाब से भी यार ओपिनियन में मैं ये लिखूंगा, अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल से। और अच्छा, और लिखने के लिए एक काम कर लेते हैं हम जरा, इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं जो इंसर्ट में हमारे पास एम्प्लॉय मैटर्स वाला पैराग्राफ है ना, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं ताकि हम जब आंसर लिखें तो और बेहतर, और भी आंसर आए हैं। गुड। ऑल्सो मे बी एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट अप्रोच एंड लो एब्सेंटीजम रेट। Really, they're very motivated. Abiba believes skilled employees are central to HCC's success. The 60 factory employees are organized into quality circles and are given paid time to meet to consider problems. Abiba discusses HCC's plans regularly with employees. Abiba expects employees to work hard and negotiates their target annually. Negotiates, right? Not just communicate, it negotiates. So HCC audits employee performance annually, एंड HCC परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा दिया हुआ था हमें। HCC also reviews employee satisfaction regularly, and in 2023 80% were very satisfied with their job, 90% felt that the HCC value employees highly, 85% consider their 5 days annual training is to be beneficial. And employee comments include much better employer than my previous company, pay is good and working conditions are excellent. Following the 2023 review, Abiba has now decided to invest in new employee facilities, including a canteen and a restroom. This will cost HCC $500,000 and cause disruption to production during building work. The operations manager has produced a critical path analysis for the working and says it will be completed within 6 weeks.
Abiba is concerned that any delay will be costly to HCC but has given permissions for the work to start immediately. Okay, so now the approach is clearly being defined. आई गेस ओपिनियन में मैं फेवर में ही जाऊंगा यार कि यार अच्छा सीन है भाई, काफ़ी अच्छा चल रहा है सीन्स। बस कॉस्ट का आप फोकस रखो माइंड में, ऐसा ना हो जाए बहुत ही ज़्यादा, और वैसे ही नया कंपेटिटर भी आ रहा है। तो अच्छी बात है, आपने अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रखोगे तो एम्प्लॉय रिटेन रहेंगे। ऑल्सो यू आर अ सोशल एंटरप्राइज, that's also a very good point that you're a social enterprise, right? This organization is working as a social enterprise, and their focus on their social objective is also a very, very important element. Their mission is not to make maximum profit, their mission is to be good with the society and with the stakeholders as well. So introduction में हम अगर लिखें तो लिखो, मैं लिखवाता हूँ। Soft HRM approach. Soft HRM approach is when the organization Soft HRM approach is when the organization, you have to write alongside with me, you should write when I write, so it's important. Soft HRM approach is when the organization considers their employees to be a very important resource. Soft HRM approach is when the organization considers their employees to be a very important resource, and and investments are done to empower employees. Investment is done to empower employees. Abiba has been using Abiba has been using writing speed fast रखना है, ठीक है? Writing speed fast. Abiba has been using the soft HRM approach in HCC. This is because I can just think about BTL ना, BTL की टेक्निक बहुत काम आती है, याद है ना? BTL, because therefore leading to. So Abiba has been using the soft HRM approach in HCC. This is because her focus has been towards employee her focus has been towards employee development and participation, as it can be seen that as it can be seen that it is mandatory for every employee to get 5 day 5 day annual training, to get 5 day annual training and to participate in quality circles. So Aviva has been using the soft HRM approach in HCC. This is because her focus has been towards employee development and participation, as it can be seen that it is mandatory for every employee to get 5 day annual training and participate in quality circles. The targets are also negotiated
rather than rather than being imposed, which will definitely increase the sense of ownership, definitely increase the sense of ownership and the motivation level and the motivation levels of the staff. This can be seen from the survey results, which shows high level of satisfaction, leading to an increase in labor productivity from 7100 to 70, कितना हो गया था 7100 से to 7500 units. समझ में आ रहा है? पूरा अप्रोच समझा रहा हूँ कि क्या अप्रोच यूज करिए और इससे क्या फायदे हो रहे हैं. अब इसका प्रॉब्लम ना, the use of soft HRM approach by Abiba will also have some challenges, or HCC. Additional finance will have to be additional finance will have to be राइटिंग को भी कंट्रोल करना सीखना होता है, फॉन्ट भी थोड़ा कंट्रोल करना सीखना होता है, थोड़ी मुनासिब हैंड राइटिंग करनी होगी. एडिशनल फाइनेंस विल हैव टू बी एलोकेटेड फॉर द ट्रेनिंग of employees and investments such as the development of new employee facilities, would increase the overall costs for HCC. Additional finance will have to be allocated for the training of employees and investments such as the development of new employee facilities, will increase the overall costs for HCC. This makes it difficult for HCC to maintain low average costs, क्योंकि इससे आपकी एवरेज कॉस्ट तो बढ़ जाएगी ना, ज़ाहिर है खर्चे तो बढ़ेंगे आपके. This makes it difficult for HCC to maintain low average costs, and as the main target audience is lower income rural families, so having a low price is essential. Having a low price is essential. It can get difficult
which can get difficult for an organization operating with high costs of HRM. Sir, can we add, if we want to add canteen वाला scene? Yes, we can also investment वाली बात भी लिख सकते थे, बिल्कुल। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लग रही है, वो वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे, और भी अच्छा हो जाता, बिल्कुल। अब मुझे देना है अपना ओपिनियन। ओवरऑल, इन माय ओपिनियन, द HRM approach used by Abiba seems to be a really suitable one. Seems to be a really suitable one for HCC. This is because, देखो कितना क्लियर ओपिनियन दिया है, अब उसकी जस्टिफिकेशन। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज दिस इज बिकॉज the surveys, the results, and the performance overall has proved to be really fruitful. Proved to be really fruitful. The absenteeism is way below the industry average. Industry average was 5%, and हमारा था 1.7%. Is way below the industry average. The productivity has increased, and the output was more than their defined target. As HCC is a social enterprise, maximizing profits is not the only objective. Is not the only objective, and they are working towards the benefit of the people involved. This might be the reason that Abiba was satisfied with financial results, the financial results, even when the return on capital employed is decreasing from ROCE, कितना आ गया था? ROCE 3.8 से 3.4 पे आ गया था, from 3.8% to 3.4%. ये था ना? In the current
ईयर। चलो कॉपी करो, शाबाश शाबाश, कॉपी करो, फिर इसको प्रॉपरली रीड करो, प्रॉपर प्रॉपर रीड करो। ये आंसर जब मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली इतना एज इट इज़ जो है वो तुम्हें एग्जाम में नहीं लिखना होगा, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट लेवल दूँ, ताकि तुम लोगों को फुल स्ट्रेच मिले दिमाग को कि अच्छा यार कहाँ तक बात जा सकती है। एग्जाम में जब लिख रहे होते हैं तो जाहिर है इतना ज़्यादा हो सकता है हम ना लिख सकें, इसका हम अगर 50-60% भी पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एज अ स्टूडेंट इन द लिमिटेड टाइम, एज इन एग्जाम सिचुएशन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इससे ऐसा आंसर हो जाए, बट आई एम जस्ट राइटिंग एन आइडियल आंसर विच यू गाइस कैन probably फॉलो। कॉपी करो, इसको रीड करो, और आइडियली रीड करने के बाद इसको एक दफ़ा खुद से समझने की कोशिश करो कि अगर अगली दफ़ा तुम खुद 12 मार्कर कर रहे हो या अगली दफ़ा इसी तरह का कोई सवाल आता है तो तुम उसको कैसे लेके चलोगे। ठीक है जी।